जब श्री राम ने दिखाया मर्यादा का असली अर्थ, रामायण गाथा। भगवान श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, ने जीवन में धर्म और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके प्रत्येक कर्म में हमें सच्चाई, न्याय और भक्ति की झलक मिलती है। जब उन्होंने अपने पिता के आदेश पर वनवास स्वीकार किया, तब भी उन्होंने किसी प्रकार की शिकायत या असहयोग नहीं दिखाया। उनके जीवन से ये स्पष्ट होता है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी के भले के लिए हो। वनवास के समय श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने कभी भी क्रोध या असंतोष नहीं दिखाया। उनके जीवन में जो भी संकट आया, वह उसे धर्म और मर्यादा के अनुसार हल करते रहे। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी भक्ति और साहस सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री राम ने लोगों और प्राणियों के साथ हमेशा आदर और न्याय का व्यवहार किया। उनके लिए प्रत्येक जीव की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि था। वनवास के दौरान भी उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया और हमेशा धर्म के अनुसार निर्णय लिया। उनके जीवन का ये पहलू हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो संयम और मर्यादा के साथ हो। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब श्री राम ने केवल अपना निजी दुख नहीं मनाया, बल्कि संपूर्ण धर्म और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग चुना। उन्होंने किसी प्रकार की शत्रुता या क्रोध से प्रेरित होकर निर्णय नहीं लिया, बल्कि सही और गलत का भेद समझकर कार्य किया। यही श्री राम की महानता और मर्यादा का परिचय है। लक्ष्मण और अन्य साथियों के साथ उन्होंने रणनीति बनाई, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा कि किसी निर्दोष का नुकसान न हो। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि मर्यादा का पालन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय में न्याय और धर्म की सर्वोच्चता उनके जीवन का मूल मंत्र रहा। श्री राम ने रावण के खिलाफ युद्ध में भी दया और सम्मान को नहीं भूला। उन्होंने केवल दुष्ट और अधर्मी का नाश किया। उनके इस दृष्टिकोण से हमें ये सीख मिलती है कि मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संयमित और न्यायप्रिय रहता है। यही सच्ची वीरता और भक्ति का प्रमाण है। श्री राम की भक्ति और नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण सभी रिश्तों में उनके व्यवहार से मिलता है। अपने भाइयों, माता पिता, पत्नी और भक्तों के प्रति उनका प्रेम और सम्मान अद्वितीय था। उनके जीवन से ये स्पष्ट होता है कि सच्ची मर्यादा और धर्म का पालन करना व्यक्ति को महान बनाता है। वनवास में भी श्री राम ने हमेशा धर्म और मर्यादा का मार्ग अपनाया। उन्होंने जंगल में रहने वाले सभी प्राणियों और लोगों का सम्मान किया। उनके लिए हर जीव समान था। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी सभी के लिए आदर्श माना जाता है। उनके उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि सच्ची भक्ति और मर्यादा का पालन हमेशा करना चाहिए। श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को नहीं खोया। उनका प्रत्येक निर्णय धर्म और मर्यादा पर आधारित था। चाहे वो रावण से युद्ध हो या वनवास में कठिनाइयां, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुना। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनकी कथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। सिंहासन छोड़कर वनवास में जाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया। ये दर्शाता है कि सच्ची मर्यादा का अर्थ है अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन बिना किसी स्वार्थ के। उनके इस जीवन दर्शन से हम अपने जीवन में भी सच्चाई और न्याय को अपना सकते हैं। श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा साहस और वीरता धर्म और मर्यादा में है। उन्होंने कभी अपने क्रोध या स्वार्थ को निर्णय में स्थान नहीं दिया। प्रत्येक कार्य में उन्होंने न्याय और भक्ति का पालन किया। यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जीवन का हर प्रसंग आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। वनवास में रहते हुए भी श्री राम ने अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए हमेशा आदर्श स्थापित किया। उन्होंने ये दिखाया कि कठिन परिस्थितियां भी हमारे धर्म और मर्यादा के पालन में बाधा नहीं बन सकती। उनके इस दृष्टिकोण से हम सीख सकते हैं कि कठिन समय में भी संयम और न्याय के मार्ग पर चलना आवश्यक है। श्री राम ने अपने जीवन में सभी के साथ समान और आदर्श व्यवहार किया। चाहे वो माता पिता हो, भाई हो, पत्नी हो या भक्त, उनका सम्मान और प्रेम अटूट था। उन्होंने ये साबित किया कि सच्ची मर्यादा और धर्म का पालन जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। यही जीवन दर्शन आज भी मानवता के लिए प्रेरणा है। रावण के साथ युद्ध में भी श्री राम ने कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका प्रत्येक निर्णय न्याय और मर्यादा पर आधारित था। इससे ये स्पष्ट होता है कि सच्ची वीरता और शक्ति केवल संयम और धर्म के साथ होती है। यही सच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है। श्री राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी, लेकिन उन्होंने कभी मर्यादा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके हर कदम में भक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक नजर आता है। यही कारण है कि उनकी कथाएं आज भी हम सभी को जीवन में सही और न्यायपूर्ण मार्ग दिखाती हैं। वनवास में रहते हुए श्री राम ने अपने अनुयायियों को हमेशा धर्म और मर्यादा का महत्व समझाया। उन्होंने ये दिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति में न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए।
यही शिक्षा हमें उनकी कथा से मिलती है। उनकी भक्ति और जीवन दर्शन सभी के लिए प्रेरणा है। श्री राम का प्रत्येक कर्म दर्शाता है कि मर्यादा और धर्म का पालन जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई और न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सिंहासन छोड़कर वनवास में जाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया। ये दर्शाता है कि सच्ची मर्यादा का अर्थ है अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन निष्ठा से करना। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि सच्चा धर्म केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए होना चाहिए। श्री राम ने अपने जीवन में सभी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया, चाहे वो भाइयों के साथ हो, पत्नी के साथ या भक्तों के साथ। उनका आदर्श व्यवहार हमें सच्ची मर्यादा और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। उनका जीवन हर परिस्थिति में संयम और न्याय का प्रतीक है। रावण के साथ युद्ध में श्री राम ने केवल दुष्ट का विनाश किया और निर्दोष को सुरक्षित रखा। उनके इस दृष्टिकोण से ये स्पष्ट होता है कि सच्ची शक्ति और वीरता संयम और न्याय में निहित होती है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप है। वनवास के दौरान श्री राम ने जंगल में रहने वाले सभी जीवों और लोगों का आदर किया। उनके लिए प्रत्येक जीव समान था। उनके इस दृष्टिकोण से हम सीख सकते हैं कि सच्ची भक्ति और मर्यादा का पालन हर स्थिति में होना चाहिए। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी कभी मनोबल नहीं खोया। उनका प्रत्येक निर्णय धर्म और मर्यादा पर आधारित था। चाहे वो युद्ध हो या वनवास की कठिनाई, उन्होंने हमेशा सही मार्ग अपनाया। यही कारण है कि उनकी कथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। श्री राम ने ये सिखाया कि धर्म और मर्यादा का पालन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होना चाहिए। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें ये संदेश देता है कि जीवन में संयम, भक्ति और न्याय सर्वोपरि है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का असली अर्थ है। श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और मर्यादा हर स्थिति में स्थिर रहनी चाहिए। उनके आदर्श और कर्म आज भी हमें जीवन में सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंततः श्री राम की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम वही है जो कठिनाइयों में भी धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है। उनके जीवन के हर प्रसंग में हमें संयम, साहस और न्याय की सीख मिलती है। उनके आदर्श आज भी हमारे जीवन को धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। चेरी ब्लॉसम। Lord Shri Ram, whom we know as Maryada Purushottam, the ideal man of honor, presented the highest example of Dharma and dignity in his life. In every one of his actions, the ideal man of honor, we'd find a glimpse of truth, justice, and devotion. In his life. When he accepted exile at his father's command, he showed no complaint or resistance. His life makes it clear that true Dharma is that which is for the good of all. He showed no complaint During his exile, Shri Ram faced difficult situations with his wife Sita and brother Lakshman. He never showed anger or discontent. Whatever crisis came his way, he resolved it according to Dharma and honor. This is why he is called Maryada Purushottam. His devotion and courage are a source of inspiration for all. Shri Ram always treated people and creatures with respect and justice. For him, the safety and honor of every living being were paramount. Even during his exile, he did not disrespect anyone and always made decisions according to Dharma. This aspect of his life teaches us that true strength lies in restraint and dignity. When Ravana abducted Sita, Shri Ram did not just mourn his personal loss, but chose the path of war to protect all of Dharma and justice. He did not make decisions driven by enmity or anger, but acted by understanding the difference between right and wrong. This is the mark of Shraddha, great honor. He made strategies with Lakshman and his other companions, but always kept in mind that no innocent should be harmed. His life teaches us that adherence to honor should be in deeds, not just words. The supremacy of justice and Dharma in every decision was the core principle of his life. Even in the war with Ravana, Shri Ram did not forget compassion and respect. He only destroyed the wicked and the unrighteous. From this approach, we learn that a person who follows the path of honor remains composed and just in any situation. This is the proof of true bravery and devotion.
Even in the war against the supreme Ravana, example of Shri Ram's devotion and morality is seen in his conduct in all relationships and the unrighteous. His love and respect for his brothers, parents, wife, and devotees were unparalleled. Remains composed. His life makes it clear that following true honor and dharma makes a person of true bravery and devotion. Even in exile, Shri Ram always followed the path of Dharma and honor. He respected all the creatures and people living in the forest. For him, every being was equal. This is why his life is still considered an ideal for everyone. From his example, we can learn to always follow true devotion and dignity. Honor and Dharma makes a person great. Even in exile, Shri Ram always followed the path of Dharma and honor. He respected all the creatures and people living in the forest. For him, every being was equal. This is why his life is still considered an ideal for everyone. From his example, we can learn to always follow true devotion and dignity. Shri Ram did not lose his morale, even in difficult circumstances. Every decision he made was based on Dharma and honor. Whether it was the war with Ravana or the hardships of exile, he always chose the right path. This is why he is called Maryada Purushottam, and his stories continue to inspire today. It was not easy for him to leave the throne and go into exile, but he obeyed his father's command. This shows that the true meaning of honor is to follow one's duties and dharma without any selfishness. From his life's philosophy, we can also adopt truth and justice in our own lives. Shri Ram's life teaches us that true courage and valor lie in dharma and honor. He never allowed his anger or self-interest to influence his decisions. In every action, he followed justice and devotion. This is why his character is called Maryada Purushottam. Every episode of his life is a source of inspiration and guidance for people even today. While living in exile, Shri Ram always set an ideal for his followers and devotees. He showed that even difficult circumstances cannot be an obstacle to our adherence to Dharma and honor. From this perspective, we can learn that it is necessary to walk the path of restraint and justice, even in tough times. Shri Ram treated everyone equally and ideally in his life. Whether it was his parents, brothers, wife, or devotees, his respect and love were unwavering. He proved that true honor and dharma must be practiced in every sphere of life. This philosophy of life is an inspiration for humanity even today. Even in the war with Ravana, Shri Ram never harmed any innocent. Every decision he made was based on justice and honor. This makes it clear that true bravery and strength lie only with restraint and dharma. This is the true form of the Maryada Purushottam. Shri Ram faced many difficulties in his life, but he never abandoned the path of honor and dharma. In every step he took, there is a symbol of devotion, courage, and justice. This is why his stories still show all of us the right and just path in life. While living in exile, Shri Ram always explained the importance of dharma and honor to his followers. He showed that one must walk the path of justice and devotion in every situation in life. This is the lesson we get from his story. His devotion and philosophy of life are an inspiration for all. Every act of Shri Ram shows that following honor and dharma should be the highest purpose of life. He made it clear that no matter what the circumstances, one should never deviate from the path of truth and justice. This is why he is called Maryada Purushottam. Leaving the throne to go into exile was not easy for him, but he obeyed his father's command. This shows that the true meaning of honor is to faithfully follow one's duties and dharma. His life gives us the message that true religion should not be for one's own benefit, but for the good of all. Shri Ram treated everyone in his life with love and respect. Whether with his brothers, his wife, or his devotees, his ideal behavior teaches us the lesson of true honor and devotion. His life is a symbol of restraint and justice in every situation.
In the war with Ravana, Shri Ram only destroyed the wicked and kept the innocent safe. From this approach, it is clear that true power and bravery are inherent in restraint and justice. This is the real nature of the Maryada Purushottam. During his exile, Shri Ram respected all the creatures and people living in the forest. For him, every living being was equal. From this perspective, we can learn that true devotion and honor must be followed in every situation. This is the greatest message of his life. Shri Ram never lost his morale, even in difficult circumstances. Every decision he made was based on Dharma and honor. Whether it was war or the hardship of exile, he always chose the right path. This is why his stories still inspire today. Shri Ram taught that the practice of Dharma and honor should be in deeds, not just in words. Every episode of his life gives us the message that restraint, devotion, and justice are paramount in life. This is the true meaning of Maryada Purushottam. The life of Shri Ram teaches us that true devotion and honor should remain constant in every situation. His ideals and actions still inspire us to walk the path of truth, justice, and Dharma in life. His life is a source of inspiration for every generation. Ultimately, the story of Shri Ram teaches us that a true Maryada Purushottam is one who follows Dharma, truth, and devotion even in difficulties. In every episode of his life, we find lessons of restraint, courage, and justice. His ideals continue to inspire our lives to walk the path of Dharma and honor today. Cherry Blossom.